Hello students, myself Professor Ashok M. Jain. In this lecture I am going to discuss some MCQ questions based on three-phase transformer. These questions will be helpful for facing I am going to discuss these questions. This is the question number 1. Which of the following connection is best suited for three-phase four-wire system? Three-phase four-wire. Three-phase four-wire मतलब स्टार कनेक्शन चाहिए तो either this or this, so it is a delta star. C answer is correct, right? So this is the best suited. Sorry. This is the answer. C. C is correct. Delta star. Then you will get four-wire system. R, Y, B or neutral, right? Four-wire. Second question. In a three-phase star-star transformer connection, neutral is fundamental to the. In star-star connection, what is the purpose of neutral? That is the answer A, suppression of harmonics. In star-star connection, if you want to suppress the harmonics, it will require this connection, star-star connection, right? Question number 3. As compared to delta-delta bank, the capacity of VV bank of transformer is. अगर आप डेल्टा डेल्टा से VV ओपन डेल्टा में जाते हैं, so it will be capacity will be decreased 1 by root 3, that is 0.577. 0.577. इसका मतलब है capacity will be reduced by 57.7%. Okay, so capacity will be reduced by 57.7%. 3 का answer A is correct. If three-phase delta-delta transformer are delivering their rated load and one transformer is removed, अगर आप एक ट्रांसफार्मर निकाल देंगे क्या हो जाएगा ये ओपन डेल्टा VV connection. Then overload of each of the remaining transformer we have studied in theory. अगर एक ट्रांसफार्मर आप निकाल देते हैं so it will be overloaded by 73.2%, right? So that is the answer is this is the correct, right? कैपेसिटी विल बी रिड्यूस बाई 1 बाई रूट 3 टाइम्स और ओवरलोड क्या हो जाएगा अगर आपका फुल लोड है सो 1 बाई 0.577 दैट इज रूट 3 इक्वल टू 1.73. सो कितने परसेंट से ओवरलोड हो जाएगा 73% से. इट विल बी ओवरलोडेड बाई 73%, 73.2%, राइट? दैट इज आंसर. याद रखो ओवरलोड अगर पहली से फुल लोड है डेल्टा डेल्टा पे और ओपन डेल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा ओवरलोड हो जाएगा कितने से 1 बाई 0.577 दैट इज 1 बाई रूट 3 का 1 बाई रूट 3 सो इट इज रूट 3 दैट इज 1.73 सो इट विल बी ओवरलोडेड बाई 73.2%, राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 5. The polarity test is not necessary. Polarity test is not necessary for the single phase transformer shown in figure. Okay, so it is not necessary for shunt branch parameter, transformation ratio, series parameter. Yes, D. कहीं भी जरूरत नहीं है. D is the correct answer, right? Any of the above necessary. Okay, so this is the question number 5. का D answer is correct. Question number 6. The eddy current loss in a transformer is 100 watts at 50 Hz. Its loss at 100 Hz will be. Frequency you can say double हो रही है 50 Hz से 100 Hz हो रही है तो आप बोलेंगे एडी करंट लॉस WE इक्वल टू क्या होता है KE 1 कांस्टेंट F स्क्वायर B मैक्स स्क्वायर और T स्क्वायर. सो आप बोलेंगे सर फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है तो एडी करंट लॉस विल बी 4 टाइम्स. नो,
बी मैक्स का भी डिपेंड करता है। बी मैक्स इसको ऐसा लिख सकते हैं, के ई मैक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान ई अपान आर वी अपान yes, so it is 4.44 f square, okay, e upon 4.44 4.44 f square, clear? And e upon 4.44 f square b max square 4.44 f bm n turns n1. If it is e1, this is n1 square. So this will be cancelled. So you can say यहाँ कहीं frequency नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है eddy current loss is ineffective. It is not affected by the frequency change. पहले 100 हर्ट्ज वाट्स था, अभी भी 100 वाट्स. C is the correct answer. No change up. If the frequency changes, eddy current loss will not change because B max is inversely proportional to the F square, so it will be cancelled. Okay, question number 7. When the two transformers are operating in parallel, they will share the load as under. When the two transformers are operating in parallel, they will share the load as under. कितना लोड शेयर करेंगे? It is inversely proportional to their impedances. That is, B answer is correct. It is inversely proportional to their impedances, right? So B answer is correct. Question number 8. Two transformers operating in parallel will share the load depending upon the rating. Correct है. Leakage reactance, efficiency no, per unit impedance. Yes, that is the correct answer. Per unit impedance. Rating कुछ भी हो, per unit, it is depending on the per unit impedance, right? So answer D is correct. In the three-phase transformer, if the primary side is connected in star and secondary side is connected in delta, right? What is the angle difference between phase voltage in the two cases? अगर आपको याद हो, प्राइमरी स्टार और सेकेंडरी डेल्टा है, स्टार डेल्टा कनेक्शन है, क्लियर? सो ये ग्रुप 3 और ग्रुप 4 में आएगा. ग्रुप 3 और 4 में फेज डिफरेंस कितना रहता है? 30 डिग्री, राइट? सो सी आंसर इज करेक्ट. इट इज आइदर इन ग्रुप 3 और 4. सो इट इज द 30 डिग्री फेज डिफरेंस, राइट? Question number 10. Star-star transformers work satisfactorily when star-star कब वर्क करता है? अनबैलेंस लोड? नो, इट विल वर्क ऑन बैलेंस लोड, राइट? क्वेश्चन नंबर 10 का बी आंसर इज करेक्ट. 10 का बी.
बैलेंस लोड है तभी काम करेगा. डेल्टा डेल्टा होता तो इट विल वर्क फॉर बैलेंस एज वेल एज फॉर अनबैलेंस लोड, बट स्टार स्टार ओनली वर्क, इट विल वर्क ओनली फॉर बैलेंस लोड. क्वेश्चन नंबर 11. What will happen if the transformers working in parallel are not connected with regards to polarity? Polarity अगर correct नहीं है, it will act as directly short circuited. Yes, B answer is correct. Incorrect, polarity will result in dead short circuit, right? So it will be short circuited. Question number 13. Sorry, 12. If the percentage impedance of the two transformers working in parallel are different है तो they will share different current because of power factor, right ना? So percentage impedance different है तो क्या होगा? Transformer will be overheated? No. Power factors of both the transformers will be same? No. Parallel operation will be not possible. Possible है but something is okay. Parallel operation will still be possible, right? But the power factors at which the two transformers operate will be different from the power factor of the common load. याद रखना, अगर percentage impedance different है, so power factor of these two transformers will be different from the common load. इसका मतलब ये हो जाएगा कि their loading will be different. So that D answer is correct. Okay, D answer is correct. 13. In a transformer, the tappings are generally provided on. Tappings are provided on high voltage side. Tappings will be provided on high voltage side. On high voltage side, current will be low. अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऑन लोड टैप चेंजिंग और ऑफ लोड टैप चेंजिंग होती है. ऑन लोड मतलब लोड ऑन है तो लोड ऑन है तो हाई वोल्टेज पे करेंगे तो करंट कम होगा. लेकिन ऑफ लोड टैप चेंजिंग है, अगर ऑफ लोड पे लो वोल्टेज साइड पे करते हैं तो ये थोड़ा सा आइदर सी या डी हो सकता था. सी कब होता है? ऑफ लोड में. और ऑन लोड में करंट कम चाहिए तो हाई वोल्टेज साइड करंट कम रहता है, राइट? सो बी केयरफुल अबाउट इट. Okay. Okay, question number 14. Question number 14. Star transformer works satisfactorily when load is balanced. कहाँ है? Load is unbalanced. No, load is balanced. Okay. Question number 14 का B is correct. 14 का B is correct. Loads must be balanced. 15. Delta star transformer works satisfactorily when load is balanced, load is unbalanced, balance as well as unbalanced load. Load balance हो या unbalanced, it can work, right? Question number 15 का C correct answer है. Question number 16. Question number 16. Two transformers are connected in parallel. Just wait. Two transformers are connected in parallel. These transformers do not have equal percentage to result in. Two transformers are connected in parallel. These transformers do not have equal percentage impedance. It is likely short circuiting. No. Power factor of one of the transformers is leading while the other is lagging. No. Transformers having highest copper loss. No. Loading of the transformers not in proportional to their kV ratings. Right. It depends. जिसका percentage impedance कम है, loading will be more. जिसका percentage impedance ज़्यादा है, loading will be less. D answer is correct.
Question number 17. For the parallel operation of single phase transformer, it is necessary that they should have same efficiency, same polarity, same kVA rating, same number of turns. So same polarity must be there. Question number 17 का B. Question number 18. The efficiency of the two identical transformers under load conditions can be determined by. टू आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर को अगर आपको चेक करना है तो यू हैव ए बैक टू बैक टेस्ट, राइट? दैट इज आंसर बी इज करेक्ट. 18 का बी इज करेक्ट, बैक टू बैक टेस्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री फेज कनेक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर कॉजेज इंटरफेरेंस विद द नेबरिंग लाइन? स्टार स्टार कहाँ है? सी. सी 19 का सी. क्लियर, इंटरफेरेंस विद द कम्युनिकेशन लाइन, सी. ओके. 20. Which of the following transformer connection will give higher secondary voltage? देखो प्राइमरी हायर सेकेंडरी वोल्टेज, प्राइमरी क्या है? डेल्टा चाहिए. डेल्टा में लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज इन केस ऑफ डेल्टा. मान लो 230 लाइन वोल्टेज है, 230 यहाँ फेज वोल्टेज आ जाएगा. स्टार में क्या होगा? फेज वोल्टेज कितना होगा? सेम नंबर ऑफ टर्न्स है, प्राइमरी और सेकेंडरी के टर्न्स आर सेम है, सो 230. तो लाइन वोल्टेज कितना हो जाएगा स्टार में? √3 इंटू 230, दैट इज 400 वोल्ट, राइट ना? इसका मतलब है डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर विल गिव द हाईएस्ट सेकेंडरी वोल्टेज, डेल्टा स्टार. क्वेश्चन नंबर बी, 20 का बी, right na? Delta star. It is clear. In case of delta, line voltage phase voltage will be same. In case of star, line voltage will be √3 times of the phase voltage. So number of turns same होने के बाद भी √3 times से voltage बढ़ जाएगा. Okay. Question number 21. A TT connection cannot be parallel with the transformer. TT connection will not be parallel with the transformer. कौन सा? 21 का स्टार डेल्टा. TT connection will not be parallel with the star delta. Clear? So this 21 का B आंसर is correct. डेल्टा स्टार डेल्टा के साथ पैरेलल नहीं हो सकता वो कभी भी. ओके. क्वेश्चन नंबर 22. Out of the following given choices for polyphase transformer connections, which one will you select for 3 to 2 phase conversion? 3 to 2 phase conversion के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं? स्कॉट कनेक्शन. A is correct. Sorry. (22) का A Scott connection. 23. The biggest advantages of TT connection over the VV connection for three-phase power transformer that it provides true three-phase four-wire system. Question number 23 का B. It will provide three-phase four-wire system. Clear? Question number 24. A TT connection has higher ratio of utilization that of VV connection. Okay, कब होगा ये? Identical transformer are used. Load power factor is leading. Load power factor is unity. Non-identical transformers are used. Non-identical transformers are used. Right? That is the correct answer. TT connection will be more utilized over the VV connection when non-identical transformers are used.
And last question we have, if all day efficiency of transformer depends primarily on it copper loss, no. Amount of load, yes. Duration of the load, yes. So that is the correct answer. D. B and C both are correct. So D is correct. Okay. So these are the answers. Clear? Question. So I have discussed 25 questions. You can say this is the answer sheet I have given. You can check your answers. Okay. Thank you. Thank you very much for listening me carefully. In the next lecture, I will develop one more MCQ questions on it. Thank you.